Assalamu alaikum everyone. Without any further delay, let's just start the webinar. I hope you all are safe at home. My name is Afsa Khan. I am president of UMT Psychology Club. I welcome you all to the Maternal Mental Health Awareness webinar. Before starting this webinar, I would like to thank our guest speaker, Ms. Ifzonia Babar, for being here. She is the clinical psychologist, lecturer in Department of Applied Psychology, University of Management and Technology, Lahore. Today, she will be briefing the participants with her immense knowledge regarding maternal mental health. Before asking Ms. Zonia, I will give a brief introduction about the webinar topic. So, the goal of today's webinar is to increase awareness of maternal mental health issues in general and to offer a series of specific, positive, and actionable recommendations to mothers and their family members. In order to benefit the overall health and well-being of families and mothers across the country. Maternal mental health is a complex, multi-layered issue. It deserves the full attention of everyone involved, families, mothers, and healthcare providers. Maternal mental health challenges are treatable but require awareness and collaborative coordination that promotes education and support for mothers. So now moving forward, I would like to invite Ms. Ifzonia Babar to address the audience. Assalamu alaikum, Ms. How are you? Walaikum Assalam. Alhamdulillah. How are you? I'm good, Alhamdulillah. Miss, I think we should start with the introduction of maternal mental health, then its causes, preventions, and why it is stigmatized in our society. Yes, of course, we should start it. Actually, I have made some slides as well for the audience that they can understand it by pictorial things and all that stuff. So, inshallah ta'ala, I will start it. Let's start. I am going to share the slides as well. Basically, today's topic is postpartum depression. We always talk about depression, and there are many kind of depressions we have learned in clinical psychology and all that. But the thing is, the kind of depression we are going to talk about today is basically the kind of depression we neglect in our life, in our person we know, or हमारे इर्द गिर्द जो भी अफराद हैं, we do not understand how they are going through the phase and the sufferings they are in. Basically, postpartum depression is the other side of motherhood. We always talk about the enthusiasm, the excitement, and also talk about the newborn happiness and all that stuff, but we forget about the mental health of mother. बेसिकली दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हमें इस चीज को भी देखना चाहिए कि हमारे जो मदर या हमारे केयर गिवर्स होते हैं, हम उनकी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हुए हम उस एक्साइटमेंट में, उस एंथुसियाज्म में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं. Postpartum depression basically is a kind of depression which is a serious mental illness जो कि इन्वॉल्व करती है ब्रेन को और अफेक्ट करती है our behavior और physical health को. The behavior is kind of behavior that we feel aggressive, we are feeling irritable, we are feeling resentless, but the things are we are thinking that कि शायद इसको जो है इस चीज का आकर बहुत ज्यादा इसने अपने आप को मोल्ड कर लिया है और ये ओवरली रिएक्ट करने की कोशिश कर रही है, and we act and think like this. Basically, postpartum depression जो है means the time after birth, the exact postpartum. Yes, most women get the baby blues after the birth of child, or feel sad or empty within a few days of giving birth. For many women, the baby blues goes away in 3 to 5 days, or within a week, or after 15 days. But the thing is, if baby blues don't go away, or one start to feel sad, hopeless, or emptiness for longer than 2 weeks, then it would be considered as a postpartum depression. Basically, feeling hopeless or empty after childbirth is not a regular experience that a mother is being suffering from, or she is feeling like that, but we consider it that maybe हम इस चीज को उस तरह से consider ही नहीं करते, because everyone is so much excited about the newborn. So we are not considering the mental health of a mother. We are just taking the care of the child or taking a physical care of the mother, but we are not considering the mental health of her. What causes postpartum
postpartum depression, there are basically two kinds of causes majorly जो कि डिस्कस की जाती हैं in all that. इसमें biological factors कुछ included होते हैं, and there are some kinds of psychological and emotional factors as well. But first of all, we will start about the what are the biological causes. In postpartum depression, the biological causes are basically hormonal changes, because after the childbirth जो है एक फीमेल के हार्मोन्स बहुत रैपिडली डिक्रीज हो जाते हैं. उसमें एस्ट्रोजन और गेस्ट्रॉन जो है वो दो लेवल्स होते हैं जो कि हाई पहले बहुत हाई होते हैं, लेकिन right after the birth of the child they suddenly or rapidly decreased. उसके बाद लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा फिजिकल एक्सर्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एक मदर फटीग फील करती हैं, एक मदर अपने आप के यानी कि एक पेन में है, सफरिंग में है, और उसके साथ शी आल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड. तो बेसिकली उन तमाम बायोलॉजिकल कॉजेस के रहते हुए और उन तमाम चेंजेस के रहते हुए शी हैव टू हैंडल हरसेल्फ एज वेल. और उसके साथ अगर हम लिंक करें साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज को, तो देन द थिंग इज द साइकोलॉजिकल एंड social issues basically talks about the family history of mood disorder. If there is any person you know about that in your family who is also suffering from this disease, or maybe the depression or anxiety or other kind of bipolar and related disorders, then there are vulnerability or the chances that the person may suffer from the postpartum depression. Having child with special need, this is also a very strong cause के mothers depression में चली जाती हैं, because the hopelessness or abnormality of the child, or maybe a child with a special need, of course it will take special attention. तो उस दौरान में उस तमाम टेन्योर में से गुजरना, प्रेगनेंसी का पीरियड गुजारना, उन तमाम तकालीफ में से गुजरते हुए when she comes to know कि उसका बच्चा जो है वो हेल्दी बच्चा नहीं है या वो स्पेशल नीड्स के साथ है, तो एक होपलेसनेस और एक एम्प्टीनेस या फिर रेस्टलेसनेस की कंडीशन जो है वो सडन है, और आप उसको यानी कि ऑब्वियस कह सकते हैं कि वो ऑब्वियस है, शी विल फील दैट वे. बट द थिंग इज हाउ फैमिली इज सपोर्टिंग हर, हाउ वी आर गोइंग टू सपोर्ट हर. अगर हमारे माशरे में सेपरेट सिस्टम में अगर किसी मदर को सिंगल मदर होते हुए या सिंगल पेरेंट होते हुए जो है वो बच्चे की पैदाइश या परवरिश करना पड़ जाती है, दिस इज आल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर जो कि प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल टू कॉजिंग पोस्टपार्टम डिप्रेशन. मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, और उसके बाद बच्चे की पैदाइश होती है, एंड देयर इज आल्सो अ रेशियो ऑफ डिवोर्स आफ्टर राइट आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. यानी कि हमने ऐसे बहुत से केसेस अपने मुआशरती तौर पर हमें देखने को मिलते हैं कि बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद तलाक भेज दी, या जो है तलाक का डिसीजन पहले हो चुका हुआ था, लेकिन क्योंकि इस्लाम शरई तौर पर इस चीज की इजाजत नहीं देता तो बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद तलाक दे दी गई. ये तमाम चीजें उस दौरान में फिर बाज लड़कियों का रिएक्शन या बाज खवातीन का रिएक्शन ये होता है कि वो बच्चे की तरफ देखती नहीं है, वो उस बच्चे को गोद में उठाना पसंद नहीं करती. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. ऑफ कोर्स रेप इज आल्सो द कंडीशन जिसको हम डिस्कस नहीं करते, जिसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं. हमें बहुत से ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जो कि टोटली निग्लेक्ट कर दिए जाते हैं. बट क्या उन बच्चों को छोड़ देने के बाद मदर किसी चीज में से नहीं गुजरती होगी, कोई इमोशंस फील नहीं करती होगी? नो, शी फील्स बल्क ऑफ इमोशंस. there are multiple psychological issues she is going through. Life crisis हो सकती हैं if there are financial crisis, and they are also already worried about that how they will arrange their bread and butter, and now they are considering it कि हाँ जी हमें इन तमाम crisis के रहते हुए, चाहे वो financial है, emotional है, marital conflict है, when we interlinked with each other, तो जब हम इनको इकट्ठा करते हैं, इनको एक समरी में देखते हैं, तो देन वी कम टू नो कि ऑल दीज क्राइसिस आर बेसिकली मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉज फॉर पोस्टपार्टम डिप्रेशन. उसके अलावा अगर आप सोशलाइज नहीं कर रहे, आपकी सोशल सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, एंड यू आर नॉट इन्वॉल्विंग विद अदर्स, एंड यू आर फीलिंग अ लैक ऑफ प्लेयर इन एक्टिविटीज और टॉकिंग विद अदर्स और विद पीपल, तो वो एक चीज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हम क्या करते हैं, हम साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज को टोटली निग्लेक्ट कर देते हैं. हमें लगता है कि हमारे मुआशरे का ये डायलेमा है कि वी थिंक दैट द मेंटल हेल्थ इज नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अ स्टिग्मा. मेंटल इलनेस इज अ स्टिग्मा.
there is basically onset of postpartum depression. 26.5% women had onset of depression before pregnancy. There are chances that within starting or planning about a baby is also a depression for some women. They also feel stressed or tensed about that how they will complete that 9 month period and all that physical exertion and that hardship they are going through. Of course ये एक ऐसा मरहला होता है एक औरत की जिंदगी में जिसमें उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आती हैं, ना कि बॉडीली बल्कि उसके अंदर इमोशनली और उसके अंदर जो है वो बिहेवियरली भी चेंजेस आती है। उसके बिहेवियर कुछ चीजों में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। कुछ चीजों को लेकर अगर वो बहुत ज्यादा मुहतात होती है या बहुत ज्यादा जज्बाती होती है तो उन चीजों में जब वो एक मदरली हुड के अंदर आती है तो उसके जज्बात उन चीजों को लेकर बदल जाते हैं। 33.4% started having symptoms during pregnancy. Of course, depression can occur at any stage of life, and there are chances. जैसे कि हमने biological और even जब हम psychological assessment की भी बात करते हैं, then we also talk about these factors कि कैसे जो है अगर आपकी life में आपने stress को bear किया, then it converted into distress, and now you are suffering from depression. Depression को basically हमने जो है वो मिक्स अप कर दिया हुआ है अपने स्ट्रेस के साथ। हम डेली रूटीन के स्ट्रेस में अगर हमें किसी बात पर रोना आ जाता है या हम परेशान हो जाते हैं तो वी कॉल इट कि भाई मैं जो हूँ वो मैं परेशान हो गई हूँ इस चीज को लेकर और मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। बट the word depression is very dark. The person who is going through is really knows about that how it eat you, ये आपको किस तरह से अंदर ही अंदर खत्म करने की कोशिश करते हैं। इट किल यू इनसाइड। 41% notice symptoms after childbirth. You can see that there is the highest rate after the childbirth, that 40.1% notice symptoms after childbirth. Then there are several symptoms जिनके तहत हम understand कर सकते हैं कि how postpartum depression can be diagnosed, and we can understand the person जो हमारे अगर if there are mommies newborn जो है हमारे घर में या फिर हमारे इर्द गिर्द हमारे फ्रेंड्स में फैमिलीज में न्यू मॉमीज हैं तो वी शुड टेक केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ एज वेल। हमें इस चीज को नोटिफाई करना चाहिए, हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और मैं कहती हूँ द अवेयरनेस रिगार्डिंग द सिम्टम्स ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन are very important, because if we know about what are the symptoms of postpartum depression, then we will be able to understand that maybe she is suffering from that. And the one important thing is there is not only the female who suffer from the postpartum depression, there are several studies who are supporting the diagnosis in male as well, husband or she is involved in other फैक्टर्स तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सिम्टम्स ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अंदर एंगर है, एंजाइटी, सैडनेस, एग्जॉशन, एंड देयर आर अदर सेवरल फैक्टर्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन इट। बेसिकली इन postpartum depression the most prominent features are that the loss of appetite, the intense irritability and anger, आप रेस्टलेसनेस फील करते हो, ठीक है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन हर वक्त आपको महसूस होता है, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा महसूस होता है, आपकी भूख खत्म हो जाती है, आपका दूसरों से बात करने को दिल नहीं करता, डेली रूटीन के अंदर यू लूज योर इंटरेस्ट एंड द थॉट ऑफ हार्मिंग योरसेल्फ, और सम इन सम केसेस देयर इज आल्सो अ टर्मिनोलॉजी दैट वी कॉल्ड पोस्टमार्टम साइकोसिस, जिसके अंदर हम जो है वो सिवियरिटी में चले जाते हैं। पीपल get into the severity and the thoughts of harming your own self, and you think about this, these suicidal ideations. There are suicidal ideations, you think about to kill yourself. Then the difficulty bonding with your baby, you are thinking that आप यानी कि बच्चा आपके पास पड़ा एंड यू आर नॉट लुकिंग एट हिम और हर, और आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देना चाह रहे, आप उसको फीड नहीं करवा रहे, आप उसकी तरफ देखते नहीं हो। देयर आर सेवरल थिंग्स, और of course the negative triad, we always talk about the cognitive negative triad. There are the pattern of negative thinking we always suffer through. जब हम किसी भी डिप्रेशन में, किसी भी स्ट्रेस में या किसी भी ऐसी कंडीशन का शिकार होते हैं तो उसके अंदर जो मेन थिंग होती है वो हमारे कॉग्निटिव और नेगेटिव थॉट पैटर्न्स होते हैं, जिनके तहत हम इस तरह की सोचों के पैटर्न्स पर चल पड़ते हैं।
बेसिकली डिफिकल्टी बॉन्डिंग विद योर बेबी इज ऑल्सो द रीजन कि आप बच्चे के मुतल्लिक जो है आप एक नेगेटिव थिंकिंग रखना स्टार्ट कर देते हो कि मुझसे इसकी परवाह नहीं की जाती, मुझसे नहीं देखा जाता, आप उससे चिढ़ना शुरू हो जाते हो, आपको उस पर प्यार नहीं आता, फियर दैट यू आर नॉट अ गुड मदर। एक जो हमारा सोसाइटल डिलेमा है, एक हमारे सोसाइटल स्टिग्मेटाइजेशन है, हम उस लेवल से बचने की कोशिश करते हैं। वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर इमोशंस बीइंग अ मदर। जो न्यूली मदर्स होती हैं वो बिल्कुल भी इस चीज को, यानी इफ द चाइल्ड इज द फर्स्ट बोर्न और वो इस चीज में से फर्स्ट टाइम सफर कर रही हैं, तो वो इस चीज को तो बहुत ज्यादा लेकर चलती हैं कि मुझे अगर मैं इस तरह से अपना आप शो करवाऊंगी तो पीपल विल थिंक दैट आई एम अ बैड मॉमी। So depressed mood or severe mood swings, or you are feeling all the day irritable, you are feeling restless, and mood swings, sometimes you are feeling up, sometimes you are feeling down, feeling of worthlessness, shame and guilt। ठीक है, उसके बाद inadequate your feeling आ जाती है, shame and guilt regarding that you are not taking care of your child and you are not taking care of the other things, and excessively crying आ जाती है, recurrent thoughts of death आ जाएगी, और withdrawal from the family and friends, that you are not feeling that you should talk with your family or friends and you should be involved in other activities with them। ठीक है, जरूरी नहीं होता, आप अपने आप पर ध्यान नहीं देते, आपकी अपनी केयर करने को दिल नहीं करता, आप अपनी हाइजीन की तरफ तवज्जो नहीं देते। These all also the symptoms of depression and these occur right after the birth of child। Then the stigmatization, the main basically the thing why we thought that there is a need to talk about the postpartum depression, the stigmatization. This is important thing. You can see in the picture that if you feel that she admit, I don't feel like being a good mother or a mother, and that this sucks a lot of the time, does that mean I don't love my baby? So basically ये जो सोचे हैं ना, ये तमाम चीजें अगर हम किसी जब बच्चे की पैदाइश होती है ना, तो मदर और बच्चे की तो जो बॉन्डिंग है, देयर आर मल्टीपल पीपल जो कि हमें उससे मुतल्लिक मशवरे दे रहे होते हैं, हमें उससे मुतल्लिक मुख्तलिफ राय दे रहे होते हैं। कुछ की राय जो होती है वो हमारी सपोर्ट में होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी रिसीव द नेगेटिव कमेंट्स, वी रिसीव द नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम अदर्स। अब स्टिग्मेटाइजेशन के अंदर क्या है कि बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो बेसिक मसला होता है ना, वो स्टिग्मेटाइजेशन से डेवलप होता है। ज्यादा कॉजेज जो होती हैं वो स्टिग्मेटाइजेशन की वजह से होती हैं। Postpartum depression basically dealing with the negative impact of depression. Women without postpartum depression also experience the burden of stigmatization. Stigma is the reason so many moms don't talk about the postpartum depression, the reason they struggle in silence. This is the reason, that's why they are struggling in silence, because they think that people will think that I am not a good mother, I don't want to take care of my child, and I cannot take care of my child। क्योंकि दूसरों को फिर जब ये लगता है ना कि ये मेरे बच्चे के, यानी कि हमारा खून है, हमारे बच्चे की परवाह नहीं करेगी, क्योंकि वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर, वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट द चाइल्ड, वी आर ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट ये तो छोटी सी नन्ही सी जान है जिसके बारे में ये एक जालिम औरत है या एक जालिम माँ है जो कि नहीं सोच रही, या ये उसका ख्याल नहीं कर रही, या इसको उसकी परवाह नहीं है, वो एक नन्ही सी जान है, उसका क्या कसूर है। बट द थिंग इज कि वो नेगेटिव थॉट्स की जो एक ट्रेन होती है ना, वो इस कदर स्ट्रॉन्ग और इस कदर तेज रफ्तारी से चल रही होती है कि शी कैन नॉट अंडरस्टैंड द फीलिंग और इमोशंस ऑफ अदर। वो उस बच्चे के बारे में सोच ही नहीं पा रही। जब आप अपने अंदर एक चीज में उलझे हुए होते हैं, आप अपने अंदर एक जंग लड़ रहे होते हैं, यू नेवर नो अबाउट द सराउंडिंग्स, यू डोंट केयर अबाउट द सराउंडिंग्स, आपके इर्द गिर्द क्या चीजें चल रही हैं आप उनको नहीं समझ सकते। Basically there is a prevalence according to this in 1 in a 7 women who give birth each year experience symptoms resulting from a postpartum mood disorder, and that close to 1 million women annually having some form of mental illness after the birth of their babies, and close to 850,000 women not receiving the help they need to get better. This is a huge figure, you can see. In Asian countries, the prevalence rate ranges from 3.5% to 63.3%. And unfortunately, Pakistan with the prevalence rate ranging from 28% to 63%, placing among the highest in Asia. That you can see the level of stigmatization and level of burden being a woman of Pakistan
we are feeling. Pakistan में, even मैं कहती हूँ एशिया में, if we talk about the India, if we talk about the Pakistan, then we can see that how much this stigmatization is affecting us. ये stigmatization again वही बात, हम इस चीज को ऐसे लगते हैं. I have even observed some females come to me when I take their sessions, तो वो मुझे बताती हैं कि हमें ये कहा जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल 9 साल बच्चे नहीं हुए और 10 साल बाद बच्चा नहीं हुआ और उसके बाद वो किसी पोस्टपार्टम डिप्रेशन में से गुजरी है, तो वो इस चीज को कहते हैं कि शायद अब औलाद होगी तो ये नखरा करके दिखा रही है. These are the stigmatization, these are the things that we never try to understand कि शायद वो किसी mental illness में से या वो किसी distress में से या stress में से गुजर रही है. हमने उस चीज को लेबलाइज कर दिया कि क्योंकि अब अरसे के बाद उसको औलाद मिल गई तो वो उस नखरे में से गुजर रही है, कि वो नखरा करके दिखा रही है कि उसको अल्लाह ताला ने औलाद दे दी. मैंने बहुत सी मदर्स ऐसी देखी हैं जिनके बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ थे और ये डिप्रेशन इवन बाद में परसिस्टेंट और फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में चले गया. ठीक है, और ये तमाम चीजें मदर फेस करती हैं. वी हैव सीन मैनी पीपल जो कि इन तमाम चीजों में से गुजरते हैं. देन उसके बाद हमारे पास एंटी स्टिग्मेटाइजेशन स्ट्रेटजीज आ जाती हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट मेनी नेगेटिव aspects of the postpartum depression. We have talked about the prevalence and we have also talked about that how it is affecting us or being a mother, how a mother call these things. ठीक है, एक औरत को ना सिर्फ एक फिजिकल जो है अपने ट्रॉमास में से गुजरना पड़ता है, बल्कि उसको एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को भी फेस करना पड़ता है. बीइंग अ मदर, दिस इज अ वेरी स्ट्रगलिंग थिंग कि आपने अपनी मेंटल हेल्थ को भी इंटैक्ट रखना है, आपने खुद को फिजियोलॉजिकली भी इंटैक्ट रखना है और आपने अपने सोशलाइजेशन को भी साथ के साथ लेकर चलना है. जरूरी नहीं है कि हम तमाम बहुत सुपर वुमेन्स हो जाएं. वी शुड गिव स्पेस टू अदर्स दैट इफ दे आर फीलिंग सैड और दे आर फीलिंग होपलेस और फीलिंग रेस्टलेस फॉर सम टाइम्स, वी शुड गिव देम स्पेस. ये उनका राइट है. फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं और वो उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती. बट द थिंग इज, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, मेनी ऑफ अस डजंट अबाउट इट. हमें से किसी को भी इसके बारे में नहीं पता. वी डोंट नो अबाउट इट कि किस तरह से ये एक इंसान को अंदर ही अंदर से खत्म कर देता है. वी डू नॉट कंसीडर डिप्रेशन. हमें एक शख्स हंसता मुस्कुराता नजर आ रहा होता है और व्हेन दे अटेम्प्ट सुसाइड, तब हमें पता चलता है कि वो मेंटली तौर पर कितना ज्यादा सफर कर रहे थे, वो किस कदर ज्यादा डिस्टर्बेंस का शिकार थे. एंटी स्टिग्मेटाइजेशन स्ट्रेटजीज के अंदर बेसिक 3 कॉन्सेप्ट आई थॉट कि आई शुड डिस्कस. बेसिकली द थिंग इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल द एजुकेशन. दिस इज वेरी important that the challenging the myth of mental illness with factual information. We should educate people about this. Being a psychologist, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर psychology के भी students होंगे और of course this is also our responsibility कि being a part of unit regarding the mental illnesses or mental problems or issues many people are suffering from. हम इस सोसाइटी में रहते हुए क्यों बेसिकली हमारी जो नीड्स है ना, हायरार्की ऑफ नीड्स, हम उसमें पहले 3 लेवल्स ही पूरे नहीं कर पाते. मैस्लो की हायरार्की के नीड के अकॉर्डिंगली अगर हम चले ना, तो हम पहले बात करेंगे बेसिक नीड्स की, फिर हम बात करेंगे सेफ्टी नीड्स की, फिर हम लव एंड बिलोंगिंगनेस की बात करेंगे. हम अनफॉर्चुनेटली ऐसे मुआशरे में ताल्लुक रखते हैं या ऐसे मुआशरे से वाबस्ता हैं जहाँ के लोगों के अंदर ना तो बेसिक नीड्स मुकम्मल तौर पर पूरी हो पाती हैं. देयर आर ओनली मेरे ख्याल से 30 to 35% पीपल जिनकी बेसिक नीड्स जो है वो कंप्लीट हो पाती हैं प्रॉपरली. अदरवाइज देयर आर मेनी पीपल जिनको 3 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, जो शायद 1 वक्त का खाना खाते हैं. तो दे नेवर टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ, दे विल नेवर डिस्कस इट. आप अगर वही मिसाल है कि अगर आप किसी डिप्राइव्ड एरिया में जाएंगे ना अवेयरनेस के लिए, तो वो आपको बताएंगे कि देयर आर मेनी मेनी वुमेन हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर, हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस पेन, बट दे नेवर नोटिस्ड इट, दे नेवर न्यू अबाउट दिस. बहुत ज्यादा केसेस हमें स्किज़ोफ्रेनिया के रिपोर्ट होकर आते हैं. पोस्टपार्टम डिप्रेशन कैसा निग्लेक्टेड एरिया है जिसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना, लोगों को एजुकेट करना, दिस इज अ चैलेंजिंग मेथ. देन प्रोटेस्ट, लाइक
being a female, if you are the victim of the stigmatization, then you should protest, making moral appeals to stop stigmatization. You should talk about it, you should discuss about it, that if you are suffering from any kind of illness, then you should talk about it. Do not suffer in or struggle in silence. दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप इस बारे में बात करें, आप प्रोटेस्ट करें कि आई एम फीलिंग नॉट वेल, मैं मेंटली तौर पर भी डिस्ट्रेस का शिकार हूँ. इफ देयर आर क्राइंग स्पेल्स, इफ यू आर हैविंग द सुसाइडल थॉट्स, यू शुड टॉक अबाउट इट. आपको किसी न किसी से उसके बारे में बात करनी चाहिए, आपको साइलेंटली सफर नहीं करना चाहिए. एंड कॉन्टेक्ट क्रिएटिंग इक्वल इंटरेक्शन बिटवीन द पब्लिक एंड इंडिविजुअल विद द मेंटल इलनेस. You should contact with your peers group, you should contact with your parents, you should talk with your husband. आपको अपने पार्टनर के साथ बात करनी चाहिए उसके बारे में कि what are you feeling actually, why you are not taking care of your child and why you are unable to take care of your child. You should talk about this. Then the most important thing, I was talking about the treatment. So what can I do at home to feel better while seeing a doctor for postpartum depression? Postpartum depression basically ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए दिस इज इम्पोर्टेंट कि हम किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें. This problem need consultation, so this is important to take consultation from a doctor. And while if this there is no doctor you have decided to visit, then you should take these treatment or tips at home. Rest as much as you can and sleep when the baby is sleeping. Don't try to do too much or to do everything by yourself. You should ask or seek help from others. You are a human being, and if you are suffered from, इनके हमारे यहाँ अगर सिजेरियन हुआ है या फिर नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है, तो आपकी बॉडी को फिर भी रेस्ट की जरूरत है. You cannot work 24/7. Being a healthy person, we also need rest. हमें 8 घंटे की नींद चाहिए, हमें अपने दिमाग को तरोताजा रखने के लिए हेल्दी एक्टिविटीज की जरूरत है. तो why not we should consider it for our moms. Ask your partner, family and friends for help. Make time to go out, visit friends or spend time alone with your partner. That if your baby is sleeping, then you should talk with your partner and you should spend some time with your partner alone and talk about your feeling with your partner. Supportive family members and friends, of course, अगर family support कर रही होती है या अगर family आपके लिए यानी कि परवाह कर रही होती है, तो you can feel more healthier than the people जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं करती. एक शख्स जो कि ऑलरेडी एक मेंटल इलनेस में से गुजर रहा है और उस मेंटल इलनेस के होते हुए हम उस शख्स को मजीद स्टिग्माटाइज कर रहे हैं, तो बेसिकली हम उसको खुद कुएं में धकेल रहे हैं. डिप्रेशन एक ऐसा कुआं है जिसमें से निकलना एक इंसान के लिए नामुमकिन हो जाता है. और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मेरे ख्याल से आप लोगों से बेहतर ये चीज कोई नहीं जानता होगा. और द अदर ऑडियंस, दिस इज सीरियसली अ वेरी लिथल प्रॉब्लम. This is a dangerous disorder. This is a dangerous condition. You should consider it seriously. They talk with other mothers so that you can learn from their experiences and join a support group. Basically, you need to join the support groups जिनमें different जो हैं वो new mommies हैं और जो कि ask your doctor or nurses about group in your area. Then don't make any major life changes right after giving birth. ठीक है, आपको कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आप फॉरन राइट आफ्टर आपको क्या बस मैंने चेंज अपना जो है लाइफस्टाइल चेंज करना है, मैंने अब जॉब ज्वाइन कर लेनी है, अभी आपको 1 या 2 मंथ हार्डली हुए हैं एंड यू आर तो मोटिवेटेड रिगार्डिंग कि भाई अब मुझे जो है वो जाना है और मुझे अपना करियर बनाना है. इस तरह की चीजें भी आपके लिए एक एग्जॉशन क्रिएट करती है. वो चीज रैपिडली डेवलप होना शुरू हो जाएगी और वो चीज बाद में आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगी. एंड दीज आर द ट्रीटमेंट विच आर इम्पोर्टेंट. और देन आफ्टर दैट देयर इज बेसिकली इसके अंदर ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप लोग देन फर्दर मेडिकेशन भी इसके लिए अलाउ की जाती है, इसके लिए एंटी डिप्रेसेंट दी जाती हैं, एसएसआरआईज जो हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं इफ द मदर इज नॉट फीलिंग आफ्टर 2 weeks.
2 weeks tak baby blues her mother experience. There are 70 to 75% mothers who feels baby blues, but after that if the mother is not getting stable in her mood, then this is important we should consider her mental health. If she is still hopeless, she is still restless, she is irritable, she is getting aggressive, and she is not taking care of her child, and she is feeling that she is not a good mother, and crying spells are also there, then we should consider her. आप लोग कोई सवाल करना चाहें? This is all about from me, and then if you have any question, kindly ask questions about this. Well, thank you, Ms. Ifzonia, for the immense knowledge you have shared with us. If anyone has any question, then please you can ask, or any concern or query related to the maternal mental health awareness. Well, I think that's all. Uh, that was so great, Ms. Ifzonia, for having you today with us. Thank you, Thank you. everyone. Thank you for everyone for joining and supporting us. Thanks to Ms. Ifzonia Babar for sharing such an immense piece of knowledge with us. Thanks again to all. Hafsa, there is a question, I think. Okay. There's a question from Fatma Abdullah and Hafsa. Please, aap question le lein. Fatma, you can ask. I'm unmuting you. Assalamualaikum, ma'am. Walaikum assalam. Ma'am, my question is that what are steps taken by the corporates or the government, like broadly speaking, in terms of dealing with postpartum depressions? Because the women who are at work and later on they go get a leave for their for this medical condition. So how is it that they're actually how is it that we are making them comfortable and we're actually supporting them in this very particular cause? And is it like are there any steps being taken, and is it being taken seriously, or is it just something which is still so stigmatized, especially in our society? Of course, government can take steps for this, and I think that corporates and other government sectors should take steps, because the thing is there is a lack of awareness in our society. The major focus of my topic today was spreading awareness regarding that. Why I have talked about symptoms, why I have talked about the prevalence, you can clearly understand that people do not know about it. We don't have awareness regarding this very serious condition. Basically, the postpartum depression is serious condition. I am only talking about depression. We are not serious about depression as well. No one takes depression seriously. हम दूसरे पर्सन की कंडीशन को किस तरह से लेते हैं? हम देखते हैं कि एक इंसान डेली रूटीन के लाइफ, of course there is also a functional depression. We are doing our house chores, we are doing our job things and all that stuff, but we are not feeling well internally. We are not feeling that we can go on our work, we can do our house chores or other things, but the thing is we are just running our life. Internally if we are feeling that, it doesn't matter. हम सोशलाइज भी कर रहे हैं, पार्टीज में भी जा रहे हैं, बट वो भी डिप्रेशन कोई सीरियसली लेता ही नहीं है. No one talks about that as well. There are many friends around you जो कि stress में होंगे, distress में होंगे. They want to talk about their depression, but we do not listen to them. This is same with postpartum depression. We do not try to understand the mental condition of our mothers. We do not try to understand that they are going through this mental problem or mental illness and they need help. So government to be very frank, in Pakistan government is not taking actions for the other severe conditions, and this is the conditions जिसको बिल्कुल ही neglect किया जा रहा है. You can see there are evidence of many studies that this is the most neglected part in our society. Decreasing the productivity of women at work, but nobody's paying attention to it, which in turn is discouraging us from reaching out. Sorry, आपकी आवाज कट रही थी. दोबारा से अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा. Sorry. I was just saying that it's a condition which is affecting women's our Yes. our productivity,
and it is being so neglected that Yes. it's actually discouraging us from reaching out. Yes, And yes, you're right. speaking, Yeah. I don't think that it's unnoticed. It's definitely noticed, but nobody's just Yes. To be very honest, it is noticed, yes, but just to the researchers. You can talk that there are several research papers, you can see that they are talking about the postpartum depression. To be very honest, I am practicing from last 4 years, but I haven't seen any female coming with a postpartum depression to me. When I talk about that कि बच्चे की पैदाइश के बाद आपने ये फीलिंग्स में से सफर किया या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई या कोई चीज, then they talk about yes, I have gone through all these things. So the point is this, that हर औरत अगर 10 में से 7 औरतें इस चीज में से गुजरती भी हैं तो they don't talk about. We are only struggling in silence because we don't want to be labelized as a bad mommy. We want to be a good mother. और अगर वो एक लेबल हम बचपन से लगवा लेंगे बच्चे के, यानी कि छोटे होने से लगवा लेंगे कि इसने तो छोटे होते अपने बच्चे की परवाह नहीं की और ये तो अच्छी माँ नहीं है, तो वो स्टिग्मेटाइजेशन के साथ तमाम जिंदगी गुजारेगी. So that's why the women in Pakistan are struggling in silence. Thank you, ma'am. जी हफ्सा. Hello, Assalamu alaikum, Miss. वालेकुम अस्सलाम. Yes, Miss. My question is that what can Pakistan on its own learn from international developed nations on how to combat postpartum depression, and like on a social level, economic level, and like if we have collaborations with NGOs, with hospitals and other type of institutions, all right, on postpartum depression, and have more awareness and some type of like groundbreaking on this whole disorder, etc. So what can we learn from them really? Basically, of course, if we talk about the WHO, if we talk about the UNICEF and different NGOs internationally or nationally, they also talk about the women rights. They also talk about the postpartum depression and other mental illnesses regarding the female. But the thing is, how practically or actively we are doing awareness spread करना. We are doing that webinar, we are conducting workshops, we are doing conferences, but we are talking about research work. We are talking about that these interventions and these treatments can be given to females and all that stuff. But again, the thing is, when you are practicing, how much cases reported, कौन आता है आपके पास इस केस के साथ. Even if you want to spread awareness, again you should go to the deprived areas, you should talk about it, you should ask women कि हाँ जी वो इन चीजों में से गुजरती हैं और इन तमाम प्रॉब्लम्स को वो फेस करती हैं, then they should talk about it. अब ऐसा क्यों होता है कि यूनिसेफ उन एरियाज में पाकिस्तान के पहुंच जाती है जिन एरियाज में हम लोग नहीं पहुंचते? क्या आपने कभी किसी ऐसी एनजीओ के लाहौर में हो, कराची में हो, इस्लामाबाद में हो, आर दे टॉकिंग अबाउट ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ women? They are not talking about such problems. They are only talking about the emerging issues and the hot issues जो कि मीडिया में भी हाईलाइटेड हो, जो कि दूसरों के सामने भी हाईलाइटेड हो, जिनको इंटरनेशनली भी हाईलाइट किया जा सके. This area, consider it, we talk about it, but we do not spread awareness regarding this. The main thing is, you want to spread awareness regarding postpartum depression, look at your surroundings, talk about your symptoms and tell people about this. अब अगर मैं आज 20 साल पहले साइकोलॉजी के स्कोप की बात करूं तो आज से 20 साल पहले साइकोलॉजी पाकिस्तान में उस तरह से स्प्रेड नहीं हुई थी जैसे आज हम साइकोलॉजी को जानते हैं. जैसे गवर्नमेंट आज साइकोलॉजिस्ट के लिए जो है वो सरकारी नौकरियों के अनाउंसमेंट करती है. आज से 20 साल पहले इतनी रैपिडली अनाउंसमेंट नहीं होती थी. हर महकमे में, हर अदारे में, हर डिपार्टमेंट में साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं महसूस की जाती थी. But now you can see there are multiple seats for psychologists in every domain because now they are
trying to understand that how much this domain is important, how much mental health is important. This is all due to the international NGOs and all that you are talking about, कि कैसे हमें इन चीजों से सीखना चाहिए और हम किस तरह से इसको देख सकते हैं. तो basically we are trying to accept all these things and we are trying to work on this, but still we are struggling और हम अभी इस phase में हैं. And I think that Pakistan will overcome all these stuff. अभी हमारे हेल्थ केयर के अंदर और भी बहुत सारे इश्यूज आपको देखने में मिलते हैं. Not only mental illnesses, not only psychological issues, but also about the physiological issues. You can see that how many there are cancer hospitals in Pakistan and how many there are further you can see that how healthcare workers are working. So basically this is important. Thank you very much, Miss. Just one last question. If a woman, she has postpartum depression, but before that, before her pregnancy, she was also going through any other disorder like anxiety, or she was going through schizophrenia, some other disorder completely, and then following her pregnancy, she's going through postpartum depression. So now she's combating two illnesses at the same time. So how is that going to affect her? Of course, if you have studied about the different comorbidities, then you must know about that, that if female is going through a pregnancy or then also suffering from different kind of disorders, and these are two disorders you are talking about. Of course, if the mood disorder was a bit was there, then there is a higher probability that she will fall into the postpartum depression. Of course, if she was going through the depressive symptoms already किसी mood disorder में से या even schizophrenia में से गुजर रही है, तो psychosis और psychosis postpartum is basically also there. ठीक है, दिस इज ऑल्सो टर्मिनोलॉजी जो कि 10,000 में से 1 वुमेन को होता है साइकोसिस पोस्टपार्टम. तो दैट कुड बी अ कंडीशन देयर basically before labelizing with or with a diagnosis that और कि जी इसको schizophrenia है, इसको depression है या इसको ये problem है, we should consider it very keenly और हमें बहुत ज्यादा इसको जो है sharply देखने की जरूरत है कि आया कि ये इस diagnostic criteria पर पूरा fall कर रही है. ठीक है, basically what we do, we on the very first time we try to give the primary and secondary diagnosis because we are always there to assess the person, because we are so judgmental. We are always try to कि जी हमें इसका जो है वो analysis देने की जरूरत है कि हम diagnosis देते हैं. But what about the mental health? This is the main thing. When we are practicing, we focus on assessment rather than more assessment. And then when we talk about the treatment, हमारे treatment उतना ही पीछे चला जाता है. हम 70 to 80% assessment पर तो काम कर लेते हैं, but हमारी जब ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन का काम आता है ना, तो उसमें से हमें आउटपुट जो है वो 10 to 20% मिलता है. So you are talking about the comorbid issues, and comorbid issues basically can happen, and then it is highly recommended कि उसको फॉर एग्जाम्पल अगर स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ज्यादा सीवियर है तो उसकी नेसेसिटी है शी कैन नॉट टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड. ऑफ कोर्स अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट है तो आपको स्किज़ोफ्रेनिया के अगर आपने क्लिनिकल अब तक पढ़ ली हुई है तो आपको अच्छे से पता होगा कि स्किज़ोफ्रेनिया के क्या यानी कि उसकी सिम्टम्स होती हैं और उसका क्या क्राइटेरिया है. तो एक मेंटल इलनेस के साथ रहते हुए उसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर तो कोई इशू तो नहीं आ सकता. ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी दिस इज पॉसिबल कि उसके अंदर ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाए और वो इस तमाम फेज में से गुजरे और देन भी ये कोमोर्बिडिटी भी हो जाए. बट देयर आर वेरी लेस रिसर्चेस ऑन दिस एंड देयर आर वेरी लेस मटेरियल यू विल गेट अबाउट दिस, but there is a possibility of primary and secondary diagnosis. Great, thank you very much, Miss. Okay, Miss, we have a question from Momna as well. Momna, would you please unmute yourself? Assalamu alaikum, ma'am. I had a question that, you know, we have a lot of new mothers, mashallah, nowadays in our surroundings. And if we see a mother and if she is facing this postpartum depression, and mostly the patients that are suffering from depression, no one can, you know, recognize that they are actually facing it. And mostly patients nowadays, especially in Pakistan, they don't want to seek help or from doctors and from anyone in the family as well. So how can we recognize that mothers are actually facing it, and how can we help them without making them feel uncomfortable with that they are actually having some problems with their
mental health? Basically, when you feel that a person is from a dilemma or from a grief or maybe a depressive symptoms or distress, then we try to console them, we try to take care of them, we try to check them again and again if they are feeling good and if they are trying to um, uh, इंडल्ज इन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज और हम उन्हें मुख्तलिफ किस्म की सोशल एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड करने की या इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो बेसिकली द वे वी आर ट्रीटिंग डिप्रेशन, द also we are going through with all these treatment और intervention plans. हम CBT यूज करते हैं, हम टॉक थेरेपी इस्तेमाल करते हैं, फैमिली सपोर्टिव हो तो हम सपोर्टिव फैमिली जो है वो थेरेपी यूज करते हैं, काउंसलिंग सेशंस हो सकते हैं, जो है आपके मैरिटाइल जो होती है उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उसके बारे में जो है उनको गाइडलाइंस दी जाती हैं. बट द थिंग इज इफ यू डोंट वांट दैट के उस पर्सन को पता चले कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो, तो बेसिकली यू शुडंट गोइंग एंड टेल देम कि हाँ जी आपको ये प्रॉब्लम है और मैं आपको इसका सोल्यूशन देना चाह रहा हूँ. यू आर टेकिंग केयर, यू आर चेकिंग एंड बैलेंस ऑन देम. आप उसको चेक कर रहे हो अगेन एंड अगेन, आप जो है उनसे पूछ रहे हो, उनको उनके घर के मुख्तलिफ कामों में मदद करने की कोशिश कर रहे हो, उनको हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हो. तो बेसिकली दिस इज द थिंग दैट यू आर हेल्पिंग देम आउट. Psychologically, if we want to make someone relax and relief, then this is important कि हम उनके मुख्तलिफ चीजों में उनका हाथ बटाएं. अगर वो नेगेटिव सोच रहे हैं तो उनको उनकी अच्छाइयों के बारे में बताएं, उनकी सेल्फ स्टीम को जो है वो हाई करने की या बूस्ट करने की कोशिश करें ताकि वो अपने अंदर अच्छा महसूस करें. There are the times when people think that they start to blame themselves. For example, if she is thinking that she is not a good mom, then you can point out some things कि भाई तुमने जो है देखो अब इसको चेंज किया है. Being a mother आप इतना ही कर सकती हो, आप बच्चे को केयर कर रही हो, बच्चे को फीड करवा रही हो या उसको जो है उसके चेंज कर रही हो. तो बेसिकली being a mother you are doing your all responsibilities. So आप जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स है आप उनको उनके यानी कि मेंशन करो, उनको हाईलाइट करो दैट यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड यू आर अ गुड मदर एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड यू आर गिविंग योर बेस्ट एंड यू शुड सोशलाइज एंड यू शुड टॉक टू अदर. आप उनको जैसे फॉर एग्जांपल अगर फैमिली सारी बैठी हुई है वहां पर तमाम फैमिली उनके साथ बैठे. इवन बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिनमें हमें उन्हें रियलाइज करवाने की जरूरत होती है दैट शी इज नॉट अलोन. Basically, if she is feeling alone, this is the reason that she should kill herself. हम जब डिप्रेशन के पेशेंट्स को अकेला छोड़ देते हैं ना तो उनकी नेगेटिविटी की जो एक कनेक्शन होता है ना वो स्ट्रेंथ पकड़ता जाता है. एंड व्हेन इट स्टार्ट टू गेटिंग स्ट्रांग देन देयर आर द वल्नरेबिलिटी के वो सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे. तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप जो अगर दूसरे की हेल्प करना चाहते हो तो आप साइलेंटली जो है वो उनको मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ कामों में हेल्प आउट करो. उनकी माइंड यानी कि जिसे कहते हैं ना ब्रेन वॉश करना, हम जिसे कहते हैं, आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के साथ ब्रेन वॉशिंग करो उनकी एंड यू विल सी द इफेक्ट्स. Thank you, ma'am. Thank you, Miss. All the questions were very well explained. So does any participant have any other question? I think that's all. Once again, thank you, Ms. Ifzonia, for joining us today and sharing the immense knowledge with all of us. So that's all in this webinar. Thank you all for joining us today. Thank you, ma'am. Thank you.